Assalamu alaikum, and my dear students, today it's going to be the last lecture of this course. We have driven the roller coaster for the last 31 lectures, and today it's the 32nd one. And today I'm not just going to give you the recap of the last lecture that was basically on water, but I'm going to give you the recap of the whole course. And then we will see that how much we were successful in terms of our outcomes. That I promised that, okay, this is what I'll be doing throughout this course, and let's see whether we have achieved it or not. If we have not achieved it, I would say start looking at these CDs again. And if we have achieved it, that's very well done. I'm happy about it. It was an interesting journey working with you folks, even though I haven't seen you, but you haven't seen me for the last 31 lectures. And I believe that the subject that you chose, that was quite crucial, and it required attention, and it was not just a bookish lecture. It was not just a bookish something which won't prompt you to think. When I studied this natural resource planning, believe me, it just opened a new window for me. It prompted me to think about environment from a different lens. It motivated me to read more about the policy fixes rather than the policy formulation, because I felt that there were gaps between policy formulation and the policy implementation. It showed me a window that, okay, the traditional mechanisms that we have been talking about, या वो जो किताबों में जो पुरानी चीज़ें लिखी हुआ करती थी कि जी प्लानिंग ऐसे होती है, and these are the models, government ने ये काम कर दिया, उसने ये काम किया दिया. But being a citizen of Pakistan, what is my role and responsibility? Being an individual from a developing country, how I can contribute in terms of the management of resources. I don't need to be a government official. I don't need to be working in a ministry. I don't need to be someone big shot to make a contribution. That was all what I learned through this course. And I expect that अगर आप सारों में से कोई एक student भी, if he start thinking differently, or if it has changed the way he was thinking earlier, and now it has changed and it has translated into a different course of action, I think I'm successful in that term. Summing up throughout, you will be looking into the course outline. You must have seen in the course outline also. But today I'm just going to give you a recap of all the 31 कि हमने पूरे इन lectures में क्या किया, क्या हमने सीखा, क्या था, or whether we have achieved it or not. Now moving on, if you remember the first time I asked you this question that, okay, why environment matters? Kyunki since the beginning we have been thinking that environment is something who serves us. ये जो concept था ये हमें शुरू से दिया गया कि भाई अगर आपने काटना है तो दरख्त काटो, खाना है तो you can fish, you can do hunting. For my benefit I can make road anywhere. For my benefit I can make a factory and I can pollute anything. It was just license to abuse the environment मुझे मिला हुआ था. But there is a capacity of every system. एक side पे I am taking all the inputs from the environment, and on the other side I am dumping, or I am
जिसे कहते हैं putting all the waste back to the environment. A completely thankless job for the environment. So therefore, changes आए, and then they started thinking the environment does matter. When people started dying, when people started having issues, कि जी अब तो environment बदलती जा रही है, climate change हो रहा है, water table कम हो गया है, उसके बाद air pollution ज़्यादा हो गई है, जब इस किस्म के issues आए, then people thought कि हमें कुछ environment के बारे में करना चाहिए, and they started making environment inclusive into the production process. हमारे पास ग्रीन अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, हमारे पास पेमेंट फॉर इकोसिस्टम्स के कॉन्सेप्ट आया, हमने वैल्यू करना शुरू कर दिया, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट को हमने जोड़ने लग पड़े, हमने पॉलिसीज बनाई. वी वर मच जिसे कहते हैं प्रॉम्प्ट इन मेकिंग एनवायरमेंटल पॉलिसीज इन द रीसेंट ईयर्स एज कम्पेयर टू द पास्ट. एनवायरमेंटल लॉ पाकिस्तान के अंदर आ गया. सो एनवायरमेंट हम क्वेश्चन करते हैं ना, वाई एनवायरमेंट मैटर, तो जवाब है एनवायरमेंट मैटर्स बिकॉज इट हैज अ डीप इम्पैक्ट ऑन आवर लाइव्स. आपको आज खाना ना मिले जस्ट बिकॉज देयर इज अ फूड सिक्योरिटी इशू, वी वुड स्टार्ट वैल्यूइंग एनवायरमेंट मोर देन अ मदर. सो एनवायरमेंट मैटर्स. फिर environment is very much directly correlated with your development. हमारा जो core objective human beings का रहा है that is development. ठीक है, हम आगे को progress करना चाहते हैं. कोई भी हम ऐसा action नहीं करते जहाँ पे we would say that okay we are developed but we are negatively developed. We have regressed. So therefore, when you are getting a cleaner environment, when you are going for a better environment, it is actually positive development. So therefore, it should be something like climate compatible development होनी चाहिए. आपकी environment इस तरीके से आपकी development होनी चाहिए that it is giving a positivity in the environment. ठीक है? So therefore, environment and development are closely related with each other. There is no action which would say कि जी आप डेवलप तो होते जा रहे हैं लेकिन आप एनवायरनमेंट पे नेगेटिविटी करते जा रहे हैं, which was earlier the case. ठीक है ना, कि we were dumping every waste in the environment. फिर हमने बात की सस्टेनेबिलिटी की, which is quite crucial, which is still a valid point. and अभी भी आप किसी भी बड़ी कॉन्फ्रेंस में चले जाएं, कोई आप जर्नल उठा लें, we talk about sustainability. Well, sustainability को हमने define किया कि जो resources हैं and resources are to be utilized in such a way by the present generation कि future generation के लिए भी कुछ resources बच जाए for their sustainability. This is sustainability. The definition is very good. It's very valid. Are we following it? No. Because economics ने जो man को define किया वो कहता है जी man is rational but man is selfish. हमने फ्यूचर जनरेशंस को तो देखा ही नहीं. सो देयरफॉर जस्ट थिंक अबाउट द प्रेजेंट जनरेशन. और प्रेजेंट जनरेशन अपना जो जिस तरीके से अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहती है, लेट देम डू इट. अब सैड डायलेमा ये है कि जहाँ पे हमने एनवायरनमेंट को डिफाइन किया वहाँ पे एनवायरनमेंट अपने बारे में कुछ केस एडवोकेट कर नहीं सकती बिकॉज एनवायरनमेंट इज स्पीचलेस. एनवायरनमेंट कांट कंप्लेन. सिमिलरली जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, वी से कि जी आपकी प्रेजेंट जनरेशन हैज़ अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बचाए और अपनी प्रेजेंट जनरेशन इस तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करे कि फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज वाकई बच जाएं. बट द आयरनी इज कि फ्यूचर जनरेशन अपने लिए नहीं बोल सकती क्योंकि वो भी एग्जिस्ट करती नहीं है. अब इन्वायरमेंट फिर एज सच इन्वायरमेंट नहीं रही. यहां पे आपका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन आ गया, दोज आर द एथिक्स. कि आपके एथिक्स क्या कहते हैं, आपकी मोरालिटी क्या कहती है एज सिटीजन्स. डू यू रियली केयर अबाउट द फ्यूचर जनरेशन?
फिर हमने इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को डिफाइन किया, उसमें हमने कहा कि रिसोर्सेस आपके स्केर्स हैं, आपकी इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैं, और इसकी वजह से क्या हो रही है, आपकी इनसिक्योरिटी इंक्रीज हो रही है, आपके कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, एंड दैट इज एक्चुअली डिप्लीटिंग योर रिसोर्सेज, दैट इज एक्चुअली क्रिएटिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब हम स्केर्सिटी का वर्ड बहुत ज्यादा यूज करते थे, अब हम सिक्योरिटी का वर्ड यूज करने लग पड़े कि आपके एनवायरमेंटल सिक्योरिटी इश्यूज आपके आ रहे हैं। पीपल आर नॉट सिक्योर इन टर्म्स ऑफ दे वोंट हैव सस्टेनेबल, जिसे कहते हैं they won't have a sustainable pack of resources that can keep them alive. ठीक है, अब people will fight among each other because of the resources. आपकी conflict ज़्यादा हो गई है, अब उस conflict को manage करने के लिए you need some sound strategies. फिर हमने ये भी बात पढ़ी कि we have a humongous dependence upon natural resources. किस तरीके से, ट्रांसपोर्टेशन में, हाउसिंग के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, कल्चरल वैल्यू है आपकी, इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन होनी चाहिए लैंड यूज में, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन सारे चीज़ों को अचीव करने के लिए वी नीड एन इनपुट दैट इज योर नेचुरल रिसोर्स, वन वे और द अदर। सो वी आर हेविली डिपेंडेंट अपॉन नेचुरल रिसोर्सेज। व्हाट आर द लिमिटिंग फैक्टर्स? सबसे पहले टाइम फ्रेम। The time is limited. We don't have enough time when we can solve all these natural resource problems. Second, information. We have a very scarce information. That's why we have that limitation कि अगर हम एक policy बनाते हैं, अगर हम एक कोई फैसला करते हैं, it is based on limited information. And the last one is कि आपकी क्यों नहीं अच्छी तरीके से natural resource management हो रही, because of लैक ऑफ प्रॉपर फंडिंग। हमारे पास फंडिंग नहीं है, फाइनेंसेस नहीं है, ठीक है। फिर हमने कुछ डेफिनेशंस की, दैट वाज नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, दे आर द रिसोर्सेज अवेलेबल इन नेचर, एयर, वाटर, सनलाइट, फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। दे अकर नेचुरली within environments that exist relatively undisturbed, man-made नहीं है, undisturbed by humanity in the natural form. A natural resource is often characterized by amounts of biodiversity and geodiversity existent in various ecosystems. दो किस्म के natural resources पढ़े, one was renewable resource and another one was non-renewable resource. Renewable आपके क्या होते हैं, वो natural resources which can be replenished in a shorter period of time, like air, water, sunlight and forests. And non-renewable, vice versa. Those resources which cannot be replenished in a shorter period of time, like minerals, coal, petroleum, natural gas, because they take millions of years to be formed. Human activities produce a lot of waste materials which are thrown away into environment. These wastes cause pollution of natural resources like air, water and soil, already shared with you. Why do we need the management of these natural resources? All the things we use and consume are obtained from natural resources. हमारा input भी वही और output का जो waste है वो भी हम natural environment में डाल देते हैं. Now due to increase in population, industrialization, urbanization and demand for natural resources increasing और उसकी availability क्या है, limited है. So there is a need of proper management of natural resources. That's why we need NRM. अब ये जो प्रॉपर हम कहते हैं कि वी नीड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें हमारे पास 4 फैक्टर्स आ जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, यानी उसकी मैनेजमेंट हम सही करें। देन लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें फॉर द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट इट लास्ट नॉट ओनली फॉर द प्रेजेंट बट ऑल्सो फॉर द फ्यूचर जनरेशन। यू रिक्वायर प्लानिंग। एंड देन the exploitation of natural resources should not be for the benefit of a few people, but it should be distributed equally to all. Last,
the extracting and using natural resources, we should also plan for a safe disposal of waste so that no damage is caused to the environment. जब हमको wastage eliminate करते हैं तो हमें उसको अच्छे तरीके से करना चाहिए so that there is no negativity on the environment. That was NR. The course was Natural Resource Management and Planning. So Natural Resource हमने कर लिया. Let's move on to Planning. Planning क्या है? Mitchell क्या कहता है? Planning is usually interpreted as a process to develop a strategy to achieve desired objects, to solve problems, and to facilitate action. A complete holistic process. ठीक है ना? एक आप स्ट्रैटेजी डेवलप करते हो कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो जाएं, हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएं और हमारा जो एक्शन है वो वाकई जो हमने कहा है वो एक्शन कर सकें. या प्लानिंग इज समथिंग where the organization where you are at present and what you want to be in future. इस गैप को फिल करने के लिए what we need planning. अब इस प्लानिंग को करता कौन है? That is your planner. Now the role of planner is thus to identify a desirable future and to prepare a course of action to achieve this goal, and he records this in a plan. अब ये जो प्लानर है ये फ्यूचर स्ट्रैटेजी बना रहा है कि जी मैं ये डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स किस तरीके से अचीव करता हूं. द रोल ऑफ प्लानर इज वेरी इंपॉर्टेंट. द रोल ऑफ प्लानर इज वेरी क्रूशल. द रोल ऑफ प्लानर इज वेरी ethical because he has to make a decision जिसने पूरी कम्युनिटी पे, पूरी स्टेट पे जिसका सारा इम्पैक्ट होना है. अब नेचुरल रिसोर्स प्लानिंग इन रिगार्ड इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पॉसिबल डिजायरेबल फ्यूचर एंड स्टेट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ कोर्सेज ऑफ एक्शन टू रीच सच एंड स्टेट्स. ठीक है, सबसे पहले आप बताते हो कि मैं करना क्या चाहता हूं विद रेफरेंस टू नेचुरल रिसोर्सेज और फिर आप उनके एंड पॉइंट्स किस तरह पहुंचेंगे. यू जस्ट टेल फर्स्ट व्हाट and second is how. That is your natural resource management planning. Now come the last letter M. ठीक है, management. Management refers to controlling and planning of details. ठीक है, controlling and planning of details. By judicious use of available means, the actual decisions are made and actions are carried out to achieve the objectives. Management thus requires both plans and objectives. Management के अंदर हमें both plans और objectives चाहिए. अब पीछे हमने sustainability की definition की, how to achieve sustainable development. To achieve sustainable development, at least two requirements should be considered. दो requirements. Number one, to address also intergenerational equity issues. Intergenerational, present generation and the future generation. People who don't have enough food today will be less concerned about needs of the future generation. Very true. अगर मैं आज मेरे पास resources नहीं है तो मैं future generation के लिए क्या सोचूंगा. Number two, to develop environmental knowledge and skills to allow for economical, sustainable utilization of resources. For instance, a ban on the use of forests. A ban on the use of forest should not be imposed. Instead, a sustainable forest management concept should be elaborated with cooperation with population. क्योंकि अगर आप उस पर बैन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? लोगों की लाइवलीहुड completely खत्म हो जाएगा. A multitude of forest projects can be sustainably by a population for the satisfaction of their needs and income generation. उसके बाद UN ने क्या कहा? Education for a sustainable development. That you have to give more and more education, environmental knowledge. अब हमारे planners को कौन से challenge मिलते हैं? ठीक है, what are the challenges for the planners and हमारे managers? 4 किस्म के challenges होते हैं. Number 1 is the conflict. कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करना है, क्यों कॉन्फ्लिक्ट होगा जब आप ज़्यादा कम्युनिटीज़ के साथ जहाँ पे एक से ज़्यादा प्लेयर आ जाए, देयर इज़ ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. सेकेंड इज चेंज.
because you are changing some course of action, and change is always resisted, mostly. Then you are dealing with the uncertain situation. Uncertainty is always there. And last one is that the situation is always complex. Things are not linear in the real world. So there are 4 kinds of challenges. And what are those challenges? Number 1 is your conflict. Number 2 is your change. Number 3 is your uncertainty. And number 4 is your complexity. अब हमने प्लानिंग मॉडल्स की बात की. प्लानिंग मॉडल्स हमारे पास 2 किस्म के आते हैं, ठीक है. और प्लानिंग हम यूटी जब कर रहे होते हैं, it's a rigorous process. It's not done in one day. Planning models describe how planning may proceed. Several models have been developed in the past decades, and each reflects different values and assumptions about the nature of the world, which planning is done, and about the role of planner. क्योंकि हर एक planning में planner का role क्या हो जाता है, change हो जाता है. 2 major planning हमने पढ़ी थी. Number 1 was comprehensive rational planning, and number 2 was transactive planning. They differ in terms of involvement of local population. It is increasingly recognized कि जो participative planning है, that is more necessary for rural development and natural resource management. अब जो comprehensive planning होती है, that is basically that you are taking a lot of time, but उसके अंदर लोग कम involve होते हैं. Transactive planning के अंदर टाइम आपका कम होता है, लेकिन लोगों की आप पार्टिसिपेशन ज़्यादा करते हैं. एक में यू आर इन्वॉल्विंग मोर एंड मोर पॉपुलेशन, और एक में आपकी पॉपुलेशन कम है. उसके अंदर प्लानर का ज़्यादा क्रिटिकल रोल होता है, बिकॉज प्लानर इज यूजिंग हिज गट एंड एक्सपीरियंस टू फॉर्मुलेट अ प्लान. अब गिवन कि जैसे जैसे आपका टाइम पास होता जा रहा है, चैलेंजेस आपके डिफरेंट होते जा रहे हैं, और चैलेंजेस आपके चेंज्ड होते जा रहे हैं. कौन कौन से हमारे जो करंट चैलेंजेस हैं? The biggest challenge is कि आपके natural resources time by time they are not increasing, they are not becoming sustainable, they are becoming scarce. And however, if अगर हम natural resources को properly manage कर लें, so situation might get better. Forecasting the future shape of the world has become an increasingly important part of the policy planning of states, NGOs and international organizations. Now forecasting is becoming more and more important because you are talking about future. एक और बड़ा interesting terminology भी मैं in the recent past मैंने एक article पढ़ा, and हम बात करते हैं forecasting. Forecasting को जब हम define करते हैं, that is basically collection of data and making assumptions about the future. Planning को हम कहते हैं setting up of objectives and how to achieve them. अब जो नई term आई, which I think that is worth mentioning, or let me just say, if I can write it over here so that you can also see, and that is NOWCASTING, and this term actually exists. Now forecasting की बजाय लोग कहते हैं there is nowcasting. Nowcasting is something कि अगर आपने एक decision लेनी है जो कि अभी आप ले रहे हैं, for example you are talking about कि I need to go out. Now you are taking decision based on कि जब भी मैं बाहर जाता हूँ, मैं मुझे चोरी हो जाती है, जब मैं बाहर जाता हूँ, you are taking decision based on some prior information. जो प्रेजेंट में आप डिसीजंस ले रहे होते हैं और उसके लिए आप प्रीवियस डाटा यूज कर रहे होते हैं, इसमें हम क्या कहते हैं, दैट वी आर डूइंग नाउ कास्टिंग. सो एज प्लानर्स, yes, there are certain times when you have to, you are not even forecasting, you are doing nowcasting. ठीक है? So I thought that this is worth mentioning because it's something that we should be knowing. It's not just forecasting, people go for nowcasting also. Anyway, what are the aims?
एम्स आर बेसिकली कि आपकी नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आपकी अप्रोचेस क्या होती जा रही हैं, चेंज होती जा रही हैं। अब एनआरएम्स में हम सबसे पहले क्या बात करते हैं, रीजनलाइजेशन। दूसरी अप्रोच मार्केट अप्रोच आ जाती है, और तीसरी क्या आ जाती है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स आ जाती है। ठीक है, दीज आर द 3 अप्रोचेस दैट वी टॉक्ड अबाउट कि आपकी एनआरएम अप्रोच आपकी चेंज होती जा रही है। नाउ हाउ एनआरएम हैज चेंज्ड, इट हैज ड्रामेटिकली चेंज्ड, क्योंकि अब हम क्या बात करते हैं, साइंस बेस्ड मॉडल और जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी अब उसको हम हाईली क्रिटिक करते हैं। क्यों? बिकॉज लोगों का जो ट्रस्ट था गवर्नमेंट के ऊपर वो क्या हो गया, उठ गया। नंबर 2, पीपल वांट लोकल सॉल्यूशंस टू लोकल प्रॉब्लम्स। एंड थर्ड क्या है इंपॉर्टेंट पार्ट, क्यों हमें ये जो है नई सिस्टम ऑफ एनआरएम चाहिए, बिकॉज इट हैज फेल्ड टू इंप्रूव एनवायरमेंटल आउटकम्स एंड रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट ओवर पॉलिसी एंड मैनेजमेंट अप्रोचेस। इट हैज फेल्ड। देन आपकी नई टेक्नोलॉजीज आ गई गवर्नेंस के अंदर, वो कौन सी हैं कि जी गवर्नमेंट डायरेक्टेड एक्शन एनकाउंटर्स अल्टरनेट नोड्स ऑफ पावर, सफर्स फ्रॉम लैक ऑफ लेजिटिमेसी। गवर्नमेंट पॉलिसी एंड एक्शन आर नाउ मीडिएटेड थ्रू अदर एक्टर्स। अब सिर्फ गवर्नमेंट अकेली नहीं होती, देयर आर सो मेनी अदर एक्टर्स। टॉप डाउन इज रिप्लेस्ड बाय हॉरिजॉन्टल एंड देयर इज अ न्यू टूल किट। कौन सी हैं? पार्टनरशिप्स की अब हम बात करते हैं, कोलैबोरेशन की बात करते हैं, कम्युनिटी बेस्ड पॉलिसी की बात करते हैं, एक्शन, उसके बाद को रेगुलेशन एंड मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। फिर हमने बात किया है दैट ओके वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट रिसोर्स स्केर्सिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट रिसोर्स सिक्योरिटी। और रिसोर्स सिक्योरिटी को हमने किस तरह डिफाइन किया, इट इज द कैपेसिटी टू मीट फंडामेंटल एनर्जी एंड मटीरियल डिमांड्स, किसके लिए, for the socio-economic development of a nation and daily living conditions of its people. Objective क्या है? To ensure sufficient amounts of feasible prices and stable and sustainable supplies. उसके बाद तीन हमने chains की बात की. One is resource supply chain, second one is resource value chain, and third one is resource benefit chain. और 3 abilities की हमने बात की. टू कंट्रोल द रिसोर्सेज, पहला बात टू कंट्रोल करें, फिर टू सेफ गार्ड सिक्योरिटी, और थर्ड क्या है, टू इनकरेज कोर इनोवेशन. ठीक है, ये एबिलिटीज होनी चाहिए, ये चेंज होनी चाहिए. देन वी मूव्ड ऑन, एक हमारा लेक्चर था दैट वाज ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग. वेरी इंपॉर्टेंट. और प्रॉब्लम हमने क्या बात की, दैट प्रॉब्लम इज अ सिचुएशन जब आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव ना हो रहे हो. ऑब्जेक्टिव्स ना अचीव हो तो आप कहते हो कि ओके वी हैव अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, ताकि हम क्या कर सकें, हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकें. अब प्रॉब्लम्स हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब हमने क्या करना होता है, डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग क्या होती है कि द प्रोसेस ऑफ चूजिंग एन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, किस लिए, विच विल सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है, एंड दैट इज अ प्रोसेस. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की हमने बात की, इट्स बेसिकली अ 6 स्टेप प्रोसेस. और हम ये बात करते थे कि सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लासिफाई एंड डिफाइन द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी. सबसे पहले आप प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, फिर एक आपका क्राइटेरिया आ जाता है, सेट अप द ऑब्जेक्टिव्स, फिर आप जनरेट क्रिएटिव एंड इनोवेटिव अल्टरनेटिव्स कि हम किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर एनालाइज एवरी अल्टरनेटिव एंड चूज द बेस्ट फीजिबल वन, प्लान एंड इम्प्लीमेंट द डिसीजन, फिर आप इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं और फिर आप उसको कंट्रोल द डिसीजन करते हैं. ठीक है, दीज वर द थिंग्स दैट वी टॉक्ड अबाउट. अब डिसीजन मेकिंग, जब हमने डिसीजन मेकिंग स्टेप्स पढ़े, फिर डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स हैं, उसमें 3 आपके स्टाइल्स हैं. वन इज रिफ्लेक्सिव, सेकेंड वन इज रिफ्लेक्टिव, एंड द थर्ड वन इज योर कंसिस्टेंट. रिफ्लेक्सिव स्टाइल क्या करता है, यू मेक क्विक डिसीजंस विदाउट टेकिंग मच टाइम एंड यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन विच मे बी to get all the information that may be needed and without considering all alternatives very fast. Reflective क्या होता है, you take plenty of time gathering considerable information and analyzing several alternatives. So एक में टाइम बहुत कम लगता है, एक में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है. जिसमें टाइम कम लगता है the probability is कि decision might get wrong क्योंकि आपने बाकी alternatives को नहीं देखा. जिसमें आपका टाइम ज़्यादा लगता है, इसका मतलब आप सारा टाइम आपने एनालिसिस में लग गया और डिसीजन आपने नहीं ली. एंड द लास्ट वन इज कंसिस्टेंट, टेंड्स टू मेक डिसीजन विदाउट रशिंग और वेस्टिंग टाइम. सो द बेस्ट वन इज कंसिस्टेंट.
बट वी कांट से विच वन इज बेस्ट, क्योंकि जो प्लानर होता है वो क्या कर रहा होता है, शिफ्ट हो रहा होता है. समटाइम्स ही हैज टू टेक efficient decisions at this right at that point of time. So वहाँ पे उसको reflexive होना पड़ेगा. Sometimes उसको बहुत careful करना पड़ता है, that is reflective, and sometimes he has to be consistent. अब हमने different frameworks पढ़े थे, ठीक है, if you remember. और सबसे आजकल जो usually जो applied framework है when we are talking about the management of natural resources, that is SRL framework, Sustainable Rural Livelihoods Framework. अब ये क्या कहता है, understanding of what policies and institutions are required for effective, equitable and sustainable management of renewable natural resources. SRL framework is the most recent development of an approach of the analysis links between livelihood and natural resource uses. And last, sustainability of livelihood strategies of individuals or households depends upon access, use and development of different kinds of assets. ठीक है, assets में हमने देखा था physical asset होता है, financial asset होता है, natural asset होता है, different kinds of assets आपके होते हैं. So basically sustainability of livelihood strategies of individuals or households depend किस पे कर रहा होता है, on access, use and development of different kinds of assets. This was the framework that you can see in the slide. Assets हैं A में, B में आपका क्या है, structures and processes हैं, C में क्या आ जाता है, आपका context आता है, D में आपकी strategies हैं, E में आपकी strategy elements आ जाते हैं, और F में आपके outcomes आते हैं, and they are all related with each other. Assets कौन से हैं आपके, natural, physical, human, financial and social. Structures कौन से आ जाते हैं आपके, social relations, institutions and organizations. Context क्या है ट्रेंड्स और क्या है आपके शॉक्स, और स्ट्रैटेजीज आपकी लाइवलीहुड्स की. स्ट्रैटेजी एलिमेंट्स क्या आते हैं, नेचुरल रिसोर्स बेस्ड एक्टिविटीज, नॉन नेचुरल रिसोर्स बेस्ड एक्टिविटीज, और आउटकम्स आपकी क्या आ सकती है, लाइवलीहुड, सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. अब इसके अंदर हमने एक फ्रेमवर्क, फिर हमने डिफरेंट फ्रेमवर्क्स पढ़े कि कहाँ से आपके SRL सस्टेनेबल लाइवलीहुड रूरल फ्रेमवर्क का बर्थ होती है. तो पहला आपका आ जाता है PSR फ्रेमवर्क. PSR फ्रेमवर्क इज pressure, state and response, the most famous and the simplest framework. Pressure क्या होता है, human activities affecting the environment. State क्या हुई, observable changes of the environment. और response कि society ने क्या response किया with reference to the problem. So that is basically your PSR framework. PSR framework के बाद फिर एक और framework आया DPSIR. DPSIR क्या कहता है कि आपकी driving force क्या है, फिर आप पे प्रेशर, फिर आपकी स्टेट, फिर आपका इम्पैक्ट एंड देन आपका रिस्पॉन्स. दिस इज अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क, और यहीं से हम कहते हैं डिप्सर से आपका एवोल्यूशन होती है आपका सस्टेनेबल लाइवलीहुड फ्रेमवर्क की. आफ्टर लुकिंग into different frameworks, then we talked about community based natural resource management. इसमें हमने काफ़ी टाइम लगाया था because this is one of the trends that is coming, and this is one of the most needed thing when we talk about कि people have been kept in isolation, और लोगों को आपने ज़्यादा से ज़्यादा involve करना है, not just in policy but in the management of resources, the physical management of resources. So CBNRM is mostly about ways in which state can share rights and responsibilities regarding natural resources with local communities. क्योंकि शुरू में बिलीफ यही था कि इट इज़ द स्टेट हु ओन्स ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन CBNRM क्या कहता है कि स्टेट क्या करे, अपनी शेयर करे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद द कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ दीज रिसोर्सेज. अब इसको हम क्या कहते हैं, को मैनेजमेंट भी कहते हैं. को मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पार्टनरशिप बाय विच टू और मोर relevant social actors collectively negotiate, agree upon, guarantee and implement a fair share of management functions, benefits and responsibilities of a particular territory, area or set of natural resources. This is the very comprehensive definition of CBNRM. इसको याद रखिएगा because in most of the interviews अगर आप किसी international organization में NGOs वगैरह में जाते हैं, so they always ask you that okay, what do you think about CBNRM? So yeah, usually we refer to such definition. This definition covers
different ways in which the planning and implementing authority over natural resources can be shared among various kinds of social actors, and therefore refraining from any a priori indication of which model is the most appropriate. So yeah, it's a very general but a comprehensive definition जहाँ पे कोई सेट नहीं बताया हुआ कि जी आपने कम्युनिटी को इतना देना है या गवर्नमेंट का इतना शेयर है. इट्स अ जनरल डेफिनेशन. अब जो CBNRM है वो क्या कहता है, for poverty reduction, resource conservation and good governance. वो कहता है जी you have to achieve 3 goals simultaneously. अब वो क्या कहते हैं कि क्या आपकी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी हो. नंबर 1 is conservation, जिसकी हम कर ही रहे हैं, conserve your conservation of natural resources या natural resource conservation. जब वो कंजर्व करेंगे तो आपकी साथ क्या होनी चाहिए, आपकी पॉवर्टी रिडक्शन होनी चाहिए. यू हैव रिड्यूस्ड द पॉवर्टी एंड लास्ट ये कब अचीव होगी, जब आपकी गुड गवर्नेंस होगी. इसको हमने बहुत डिटेल में किया था कि गुड गवर्नेंस को हम क्या कहते हैं, कितने लेवल्स पे होती है, किस तरह हम उसको अचीव कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन एंड पॉवर्टी रिडक्शन. सो जब हम CBNRM की बात करते हैं सो इट शुड ऑलवेज बी 3 pronged. 1 is natural resource conservation, number 2 is poverty reduction and number 3 is good governance. फिर हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा, दैट वाज चांस. चांस क्या था, कपल्ड ह्यूमन एंड नेचुरल सिस्टम्स. ये थोड़ा सा लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, एंड इन विच ह्यूमन एंड नेचुरल कंपोनेंट्स इंटरैक्ट. नेचुरल कंपोनेंट्स की और ह्यूमंस की इंटरैक्शन को जब हम देखते हैं, द साइंस ऑफ चांस बिल्ड्स ऑन बट मूव्स बियॉन्ड प्रीवियस वर्क, जो कि हम इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते थे. ठीक है. उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू लिटिल बिट ऑफ इकोनॉमिक्स कि जी रॉबर्ट कोस्टेंजा ने एक पेपर लिखा और जिसके अंदर उसने कहा जी हम व्हाई एनवायरनमेंट मैटर. द फर्स्ट स्लाइड ऑफ टुडेज लेक्चर वाज कि जी व्हाई एनवायरनमेंट मैटर, और हमें उसकी वैल्यू उस वक्त तक नहीं पता चलेगी जब तक हम उस पर कोई मॉनिटरी असेसमेंट नहीं करते. सो इन्होंने मॉनिटरी असेसमेंट की, उन्होंने कहा जी इन्वायरमेंट की, आपके जो इकोसिस्टम की, जो नेचर जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है, उसकी वैल्यू क्या है, 33 ट्रिलियन पर ईयर. और ये उन्होंने 1990s के अंदर किया था. सिंस द नंबर was almost twice of the global gross GNP at that time, the findings generated global buzz and a generous dose of controversy. ठीक है, because ये वाला नंबर 2 दफ़ा it was twice कि जितना हमारा GNP था उससे ज़्यादा 2 दफ़ा बढ़ा था. अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया इकोसिस्टम सर्विसेज का, और 1997 के अंदर सोसाइटी फॉर इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स ने ये काम किया और हर्मन डेली ने कहा कि इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होती हैं, दे रेफर्स टू वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस एंड प्रोसेसेस थ्रू विच naturally ecosystems and the species that are part of them help sustain and fulfill human life. Herman Daly, he used to be, he's still alive, and he's a World Banker and he is a professor at University of Maryland. और जब हम बात करते हैं कि जी environmental economics से evolve हुई ecological economics, so ecological economics is a much broader concept. So उन्होंने ये ecosystem services की definition दी. ये जो बॉब कोस्टेंजा है, रॉबर्ट कोस्टेंजा, he is also an ecological economist. अब what are the drivers of today's challenges? क्या चीज़ें हैं जो हमें ड्राइव करती हैं? Because we do not have conceptual frameworks, we do not have the real data. Then there is very अभी तक कोई क्लियर वो नहीं आए clarity on the property rights. पाकिस्तान के अंदर अगर आप देख लें, we do not have a proper natural source property rights. We don't have the common property rights कि जी किस तरीके से, who owns air, who owns this. So we do not have the clarity on these property rights. Then वही वाली बात जो मैं पिछले 3-4 लेक्चर से कह रहा हूँ, we lack incentives. There's lack of investment incentives. उसके बाद the perception of public sector responsibility for maintenance. एक कंज्यूमर साइड पे भी एक हमारा एक इशू है that we think that it is only the responsibility of the government. I as citizen of Pakistan has no responsibility in the maintenance or in the conservation of natural resources. But I would say कि that's a wrong notion. हमारी as an individual भी कुछ responsibility बनती है. Instead of blaming the government, let's do something on our own. ठीक है ना?
and then promotion of activities that undercut environmental services. उसके बाद invisibility of effects as impacts are dispersed across time and geographies. उसके बाद आपका जो effect है वो आपका इस सच हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि अगर कार्बन ग्लोबल वार्मिंग हो रही है एंड इफ यूएसए और कनाडा और चाइना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिगर एमिशंस, तो उसके इम्पैक्ट्स पाकिस्तान पे भी पड़ रहे हैं. तो करता कोई आ रहा है, लेकिन उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो कहीं और चले जाते हैं, और उसके समटाइम्स इम्पैक्ट मे बी 2014 के अंदर नज़र ना आए, 2020 के अंदर उसका इम्पैक्ट नजर आए, क्योंकि इट इज़ अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट. यहाँ पे फिर हमने कॉन्सेप्ट क्या किया, हमने पढ़ा कि जी पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज. ठीक है, अब पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज के अंदर इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, एंड आई वुड अर्ज यू कि अगर आप अपना रिसर्च वर्क करते हैं, डू वर्क ऑन दिस एरिया, क्योंकि अभी पाकिस्तान में वी डोंट हैव मच ऑफ द पीपल हु हैव वर्कड अपॉन पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज एज मच. On the UNEP website there is a complete full-fledged document, full-fledged methodology कि आप PES पे किस तरीके से काम कर सकते हैं. So पेमेंट फॉर इकोसिस्टम स्कीम क्या है, इसके कोई 5 रूल्स हैं. नंबर 1, इट्स अ वॉलंटियर ट्रांजैक्शन इन विच अ वेल डिफाइंड environmental service or a form of land use is likely to secure that service, is bought by at least one ES buyer for a minimum of one ES provider if and only if provider continues to supply that service. This is how we define payment for ecosystem service. यानी it's a kind of market जहाँ पे आपका buyer भी होना चाहिए और आपका seller भी होना चाहिए, और seller ये promise करे कि ये जो environmental service है ये वो consistently आपको provide करेगा. ठीक है. Why payments for ecosystem services? There are again 5 reasons. Number 1, because हमें क्यों पेमेंट करनी है, बिकॉज नेचर हैज़ बिन प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज फ्री ऑफ चार्ज, और इसी वजह से हमने उसको क्या किया, एक्सप्लॉइट किया. फिर कंजम्पशन ऑफ इकोसिस्टम गुड्स इज फेवर्ड ओवर कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज. कंजम्पशन को हम ज़्यादा फेवर करते हैं रादर देन कंजर्वेशन पे. ठीक है. देन मार्केट फोर्सेज मस्ट बी रीअलाइंड to invest in the production of both ecosystem goods and services. इन दोनों पे आपने क्या करना है, align करना है इन दोनों पे. ठीक है. If the market forces reward investments in ecosystem services, a positive feedback loop will start in which increased investments in ecosystem services leads to increased production of ecosystem goods. फिर जितनी ज़्यादा आप इकोसिस्टम सर्विस आप करेंगे, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी उतनी ज़्यादा आपको इकोसिस्टम गुड्स मिलेंगे. दिस विल फ्यूल सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन. दैट इज द कोर ऑब्जेक्टिव. देन वी टॉक्ड अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ लैंड. लैंड यूज प्लानिंग में हमने बात की, द पर्पस ऑफ लैंड यूज प्लानिंग इज टू रेगुलेट लैंड यूज इन एन एफिशिएंट एंड एथिकल वे, thus preventing land use conflicts. अब उसके अंदर हम क्या करते हैं, जोनिंग कर देते हैं. लैंड यूज प्लानिंग इज लैंड यूज रेगुलेशंस और जोनिंग. जोनिंग क्या होती है, जोनिंग रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड, द अमाउंट ऑफ स्पेस डिवोटेड टू दोज एक्टिविटीज एंड द वेज दैट बिल्डिंग्स मे बी प्लेस्ड एंड शेप्ड. दिस इज बेसिकली जोनिंग. स्टार्ट. After zoning, what we are looking into, we talked about climate change. अब climate change के बारे में जब हमने बात की तो we have a breed of people, we say, who are climate skeptics. Even today, where people think that climate change is just a hoax, it's just a story. But जैसे जैसे IPCC reports आती गई, और अभी हमारी 5th assessment report आई है in the year 2014, the climate change is happening and it is a reality. अब इस climate change के जो ज़्यादा victims हैं, those are the poor people. They lose more and they recover less. उसके बाद climate change is becoming a challenge in the attainment of MDGs. MDGs are your Millennium Development Goals. उसके बाद it enhances vulnerabilities and it enhances risks. उसके बाद फ्लड्स, ड्राउट्स, एनुअल हार्वेस्ट, ये सारे आपके जो आ रहे हैं, जो नेचुरल क्लैमिटीज आ रही हैं, पीपल एट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज.
उसके बाद LDCs जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो वल्नरेबिलिटी में हायर नंबर पे हैं। अब हमने कुछ डेफिनेशंस की थी विच आर इम्पॉर्टेंट because people confuse weather, climate and climate change. Weather क्या होता है? It is a state of atmosphere at a given time and place with respect to variables such as temperature, moisture and pressure. Climate क्या होता है? Average weather, यानी statistical description of mean weather conditions over a period of several years, typically 2 to 3 decades, 20 to 30 years. और climate change क्या होता है? Climate change is the in excess of natural variability attributed to human activity के apart from natural changes जो आ रहे हो रहे हैं, जो humans ने जो changes एकदम as a catalyst करके उन changes को लेके आए हैं, that is basically climate change. अब अगर आप इन द फिगर देखें, यहाँ पे हमारी दो हैं. One is natural variability, बड़ा स्मूथ एक पैटर्न चलता जा रहा है, ठीक है. उसके बाद एक है क्लाइमेट चेंज नेचुरल प्लस एंथ्रोपोजेनिक. ह्यूमंस के साथ जब आ गया तो ये चेंज आपका देखें ये ज़्यादा नॉइज़ है एज कंपेयर टू दिस वन. अब एंथ्रोपोजेनिक कौन से हो सकते हैं? आपकी पॉपुलेशन. नंबर 1 पॉपुलेशन एकदम आपकी इंक्रीज़ करके. नंबर 2 हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा होगी. नंबर 3 increasing use of fossil fuels in industry and transport. Fossil fuels हमने यूज करी. And number 4 deforestation for agriculture and industry. इन सारों ने क्या किया? आपकी एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर को तेज कर दिया, ठीक है. अब क्लाइमेट चेंज जब हुआ तो देयर इज ग्लोबल वार्मिंग, देयर इज इंक्रीज्ड प्रेसिपिटेशन एंड इट्स अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड स्नो, देयर इज सी लेवल राइज, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स. अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? uncertainty in water availability. We just did it in the last lecture about water situation. Then decrease in the crop yields. Agriculture आपका कम हो गया. उसके बाद newer perspective for sources of energy. उसके बाद loss of biodiversity and increased health risks. ये सारे आपके क्या है? Changes आ रहे हैं, impacts हो रहे हैं because of climate change. फिर हमने कुछ बात की कि as public administration students हमारा policy के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है. So what is actually policy evaluation? We said that this is the final step in policy making. जब आपने policy formulation कर ली फिर आपने policy evaluation उसकी करनी है. It's basically the process to know impact of any public policy. It is about learning the consequence of public policy. ये हमारी policy evaluation है. Or the impact of any policy, whether direct or indirect, intermediate or futuristic, symbolic or tangible, is ascertained and measured through a process of evaluation. हर policy को evaluate करना चाहिए और होती भी है. अगर आपने किसी policy को evaluate करना है, what are the things that we need to remember? Number 1, उसकी effectiveness, important ingredient. And what is the effectiveness? Has a valued outcome been achieved? क्या आपने जो outcome, desired outcome था, क्या आपने वाकई वो achieve किया है या नहीं किया? Then efficiency. How much effort required to achieve outcomes? Then adequacy. Does the outcome resolve the problem? ठीक है. Equity. Are costs and benefits distributed equally? वही पॉलिसी की जब मैं बात कर रहा था कि it should not be just for just one group of people, it should be for everyone. Equity उसके अंदर होनी चाहिए. उसके बाद responsiveness. Do outcomes satisfy needs of target groups or appropriateness? Are the outcomes objectives worthy? So there are 6 parameters by which you can evaluate a policy. There are 6 criterions for that. Number 1, effectiveness. Number 2, efficiency. Number 3, adequacy. Number 4, equity. Number 5, responsiveness. And number 6, your appropriateness. किसी भी policy को आपने evaluate करना है and आपका evaluate करना लाजमी है. हमने एक पॉलिसी को एनालाइज किया था and there was a paper, I showed it to you, that was a disconnect between the policies in Pakistan. और हमने जो केस लिया था that was National Climate Change Policy of Pakistan. और हमने कहा कि एक पॉलिसी को एनालाइज करने के लिए we can use different kind of frameworks. आपका फ्रेमवर्क एनालिसिस है, आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, आपका पॉलिसी प्रोसेस एनालिसिस है, आपका डिस्कोर्स एनालिसिस है, आपकी लिंग्विस्टिक अप्रोच है और आपकी कीली एंड स्कून्स फ्रेमवर्क है. इस एक क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी को यू कैन यूज ऑल दीज 6
फ्रेमवर्क्स, बट हर एक की लेंस फ़र्क है. एक साइड पे आप लिंग्विस्टिक्स को देख रहे हैं, एक साइड पे आप उसके प्रोसेस को देख रहे हैं, एक साइड पे उसकी क्वांटिफिकेशन देख रहे हैं. सो गिवन कि किस कॉन्टेक्स्ट में, किस टाइम जोन में, किस कंडीशन में हमने किसी पॉलिसी को एनालाइज करना है, यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ फ्रेमवर्क. ठीक है. फिर हमने कुछ एनालिसिस जब किया, हमने पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज पॉलिसी के हमने किए थे, एंड दीज वर सम ऑफ द थिंग्स. हमें वो नजर आएंगे पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज पॉलिसी के अंदर ये वाले लूप होल्स हैं. इट्स एन अनरियलिस्टिक पॉलिसी ऑप्शंस उसने दिए. देन जो पॉलिसी मेजर्स बताए गए हैं वो वही पुराने जो टेक्स्ट बुक्स में आ रहे हैं, साल हर साल से वही हमने दिए हुए हैं. दैट इज रिडंडेंट पॉलिसी मेजर्स. इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज है. इट टेल्स यू व्हाट टू डू, बट इट नेवर टेल्स यू हाउ टू डू इट. देन there are hurdles after 18th amendment. 18th amendment के बाद क्या होना है, क्या हुआ, वो पॉलिसी आपको नहीं बताती कि प्रोविंसेस में पॉलिसी की कैसी इम्प्लीमेंटेशन होनी है. फिर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग इश्यूज कि जी आप कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करा. आपने ये तो कह दिया कि दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग, बट हाउ यू आर गोइंग टू ट्रेन द पीपल. डू पीपल हैव कैपेसिटी अबाउट दैट? दैट इज अ लूप होल दैट डजंट गिव्स अस एनी आइडिया इन द पॉलिसी. फिर देयर आर कोऑर्डिनेशन इश्यूज अमंग द रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स कि आपने एक पॉलिसी में इतनी ज़्यादा चीज़ें डाल दी हैं कि हर रेलेवेंट डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन आप किस तरह करेंगे. उसके बाद लैक ऑफ कंसल्टेशन विद पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी, बिकॉज नाउ क्लाइमेट चेंज इज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू. ठीक है. आई गिव यू एन एग्जांपल कि अगर आपका सियाचिन का ग्लेशियर बिल्कुल मेल्ट हो जाता है तो इट्स अ नेशनल सिक्योरिटी. हैव यू टॉक टू द आर्मी? हैव यू गॉटन देयर कंसल्टेशन? नो, वी हैवंट डन दैट. Then lacks consultation with the relevant stakeholders. Well, it says, the government document would say कि हमने बड़े stakeholders किए, लेकिन on ground we don't see. Then does not base on empirical evidence. कि कोई भी आपका empirical evidence उसके अंदर नजर नहीं आता. It is not based on the numbers. It may be based on your assumptions. फिर हमने बात की ecofeminism का जो concept and movements from north to south कि environment and women are very closely related with each other. और इको फेमिनिज्म की टर्म आई और इको फेमिनिज्म का हमने स्टार्ट लिया, हमने नॉर्थ से हमने पढ़ना शुरू किया. एंड दिस वाज माय पेपर एंड यू कैन ईजिली फाइंड इट. एंड बेसिकली वी सेड दैट इको फेमिनिज्म इज अ मूवमेंट, बट इन द साउथ इट इज एट अ नेसेंट स्टेज. हमने डिफरेंट केस स्टडीज ली और हमने कहा जी अमेरिका के अंदर इट स्टार्ट विद द लव कनाल. ठीक है. फिर केन्या के अंदर गए, फिर बांग्लादेश के अंदर गए, फिर इंडिया के अंदर चिपकू मूवमेंट है, एंड देन कमिंग टू पाकिस्तान के जी नॉर्थ के अंदर, नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर, या ये जो पंजाब के अंदर जो आपके कॉटन पिकर्स हैं. सो इट्स द वुमेन हु आर एक्चुअली रिलेटेड विद द एनवायरनमेंट. एंड इन द साउथ ecofeminism is yet to be developed. We can't say कि it is in the developed form. It is still at a very very nascent stage, embryonic stage पे. Now जहाँ पे हम जेंडर की बात करते हैं, जेंडर एंड क्लाइमेट की, वहाँ पे हम ये भी बात करते हैं that women are more closer to nature. Given their proximity with nature, it makes them more vulnerable. Now what is that vulnerability? Number one, because women have less access to resources. Women are victims of gender division of labor. ठीक है. Women are primarily responsible for domestic duties as caregivers. Early warning systems are oriented towards males. हम उसके अंदर भी disaster management के भी अंदर हमारी biasness है. After the natural disaster, women are more likely to become victims of domestic and sexual violence that we have seen in Hurricane Katrina, in tsunami, and there was another disaster where women की trafficking start हो गई थी after the disaster. And migration due to climate change will leave women behind. These were the assumptions that were made, and these are the realities that are formed after these disasters. उसके बाद we talked about the forest management in Pakistan. और जब हमने forest management in Pakistan की बात की, we said that पाकिस्तान के अंदर जो हम फॉरेस्ट एक्ट की हम बात करते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस वी वर स्टिल यूजिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल एक्ट ऑफ फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927. उसके बाद हमने आफ्टर 8 years 47 के बाद हमने 1955 के अंदर फर्स्ट टाइम हमने फॉरेस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन क्रिएट की. फिर 1962 के अंदर हमारा पॉलिसी डायरेक्टिव आया ऑन फॉरेस्ट्री, वाटरशेड मैनेजमेंट, रेंज मैनेजमेंट एंड सॉइल कंजर्वेशन. फिर 1975 के अंदर डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट आई. फिर 1980s में रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी.
1988 के अंदर recommendations of the National Commission on Agriculture, 1992 के अंदर हमारा आता है Forestry Sector Master Plan, and 1992 में हमारी National Conservation Strategy आती है, 1993 के अंदर हमारी policy आती है Banning the Commercial Felling of Trees, and 2002 के अंदर हमारी National Forest Policy आती है. अभी मैंने बताया था कि हमारी नई फॉरेस्ट पॉलिसी गई हुई है in the parliament for approval. Let's see what kind of feedback it comes out, but in 2014 we have sent the upgraded policy. उसके बाद the course moved on and then we did 2 case studies. इस पूरे कोर्स के अंदर हमने 2 case studies की थी. One was of the coastal ecosystem with reference to climate change, with reference to environmental security, with reference to natural resource management. And the second one was in the northern areas, that was the Sugar Valley, again covering the whole 3 parameters, one reference to climate change, environmental management, and your changing trends with reference to environmental security. In दोनों case studies के अंदर जो हमारे parameters थे, that was the same. ठीक है, जो हमारे variables थे वो same थे, but उनके जो effects है, they were different. The way people are coping up with reference to climate change वो different है in the coastal areas, and the way people are coping in the northern areas, that is different. Obviously it has to be different because एक आपका coastal ecosystem है और एक आपका mountain ecosystem है. The point was कि जब हम climate indices बनाते हैं, climate index numbers बनाते हैं, वो हम country के बनाते हैं. But if you look at a closer level, you would see कि हर district की जो coping mechanism है वो फर्क है. Maybe people of Islamabad, the way they will cope up with the natural disaster, it is totally different as compared to the people of Karachi, as compared to the people of Lahore. Because हर एक का infrastructure फर्क है, हर एक की resources फर्क है, हर एक का impact फर्क है. कराची के अंदर बारिश होती नहीं है, तो कराची के अंदर एक दफ़ा बारिश हो जाए, and given के it has a bad वो जिसे कहते हैं sanitation system, क्योंकि होती नहीं, that's why it's all closed, that's why it just creates a flooding situation. पंजाब के अंदर होती रहती है, that's why there it's little better. Islamabad is a planned city, that's why पानी अगर आ भी जाए तो it's much better. So हर एक का coping mechanism फर्क है. Now the problem is that when we are developing a policy, we just make one policy for everyone, as if one size fits all. But that is a wrong notion. There has been research कि जी आपके district level पे climate indices आपके फर्क हैं, climate vulnerability आपकी फर्क है. जब ये climate vulnerability फर्क है तो आपकी mitigation भी आपकी क्या हो जाती है, change हो जाती है. In order to respond to that change, what we do is our climate policies, our climate strategy need to be different. ठीक है, वो कहते हैं ना think global, act local. So that's why जब आप एक policy बनाते हैं तो it should be that flexible. जहाँ पे मैं incentive की बात करता हूँ, वहाँ पे flexibility की बात करता हूँ, it should be as flexible so that coastal वालों के लिए एक different policy का tool आ जाए, और ये जो है आपके mountain ecosystem वाले इनके लिए different policy tool है. You can't treat the same policy on the 2 levels because both of their environments, both of their impacts, both of their mitigation strategies are totally different. So that was the reason that we covered these 2 case studies. Another case that I wanted to always discuss, but I will encourage you to do browse it yourself, is the desert ecosystems. Most ignored, and we don't see much of the work being done in terms of climate change with reference to desert ecosystems in Pakistan. But it is a very good opportunity in terms of work. फिर हमने एनर्जी की बात की. एनर्जी के ऊपर हमने डिफरेंट सिनेरियोज देखे. हमारा पाकिस्तान के ऊपर आजकल फोकस है अल्टरनेटिव एनर्जी के ऊपर. 2006 की एनर्जी पॉलिसी आई, देन वी टॉक्ड अबाउट 2014 एनर्जी पॉलिसी. Still under review, lot of processes, lot of critiques on it, and I gave you a comprehensive, holistic critique on it. कि पाकिस्तान की पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी कैसी है एंड किस किस्म से हमें अप्लाई वो करना है. So we covered the climate change policy, we covered the energy policy. Then we talked about agriculture. Agriculture के अंदर हमने agriculture pricing policy को देखा था, and in the agriculture pricing policy what we were talking about was that it's a kind of biased. If it favors the agricultural farmers, then it exploits the feudal people exploit it, because they say जी हम 40% indirect taxes दे रहे हैं, हमें taxable नहीं होना चाहिए. But what these farmers are doing is that as they are earning more and more, ठीक है,
what they are doing is they are investing their agricultural income into real estate, which is not fine, and which makes them more culprit as compared to that they should pay the agricultural taxes. On the other side, we find out more reasons that why agricultural जो हमारा contribution towards GDP, that is reduced from 50% to 21% in 2014. So these are some of the issues, और हम किस तरीके से agricultural competitive बन सकते हैं, किस तरीके से हम agriculture में value additions कर सकते हैं. Those are things that we talked in agriculture. Then the last topic that we talked about was water. Water के अंदर हमने discuss किया था कि जी water क्या हमारी sources हैं, water क्यों हमारे लिए important है, और मैंने फिर एक और concept आपको बताया था जिसमें carbon footprint है. We can calculate a carbon footprint. Similarly, we can calculate the carbon water footprints. As if you are sitting in your room, you have so many things around you. आप किसी भी चीज़ को उठा के उसका water footprint calculate कर सकते हैं कि इस particular good को बनाने के लिए water कितना लगा था. जितना ज़्यादा आपका water footprint होगा उतना ज़्यादा, it means कि आपके water की consumption ज़्यादा है. We also came to realize that we have crossed that threshold of water stressed. Now we are going to become water scarce nation, and it's just a matter of time. जितना ज़्यादा हम time लगाएंगे उतना ज़्यादा situation is going to be worse. Energy crisis आपके मुल्क में वैसे ही है. Then how to manage water? We also realize that okay, it's more of an allocation issue. It's not of कि जी आपके climate की वजह से आपके water scarcity आ रही है, because mostly जो आपके donors ने आपके institutions ने research किया जैसे कि there's a water management issue, and we are not enhancing our agricultural capacity because we are still using the medieval traditional ways of things. हमारा irrigation अभी भी traditional mechanism के साथ चल रहा है. We have to adopt to the new technologies. We have to invest more money into it. अगर आप वापडा वगैरह से पूछें तो they say that we have the problem of limited funds, limited technology, limited human resource, and those are the true facts. So therefore, reduce the dependence upon the foreign funds, generate some indigenous mechanisms by which people becomes part of the process. And we need some big mega projects to overcome the energy crisis and to move towards the water stress situation rather than becoming the water scarcity one. So water policy आपकी ज़रूरी है. We need to have a good water policy which actually वो तो हमने vision बनाया हुआ है. You need a water policy so that better management of this important natural resources done. Those were all the topics, diverse topics that we have covered throughout the course. Now, I ask you people that whether you understand natural resource planning as a process with recognizable phases, have you effectively considered the multiple dimensions of natural resource management? Have you learned to analyze resource management problems, suggest explicit alternative management approaches, and to identify potential consequences of those approaches? Are you familiar with the current issues in natural resource management? Have you developed the written and oral communication skills, which is very important? As I said, it's not what you say, it's how you say it. So no matter how good you are in terms of your knowledge, but until and unless you can't express it, you still need to work upon it. And last one, have you developed to analyze the natural resource management policies? I tried to analyze every policy with reference to Pakistan, and I hope by now you are, chalo, 6 में से नहीं, if you have even achieved 3 to 4 outcomes, I'm successful in terms of teaching that course. And if not, again start watching these CDs, and inshallah you will find something new into it. Till then, it was really nice interacting with you people. Have a wonderful time ahead. Best of luck, and if any problem, you know, Google, browse it, or you can always ask the virtual campus coordinators to help you out with any of the queries. Thank you very much, and best of luck.